So good morning once again. Today we are going to have a practice session of chapter 9. I have written here 3 questions on the board which you are going to solve right now. And after that we are going to solve few more questions. And I will be sending few more assignment to you which you will solve and send me your responses, your feedback, your solutions, whatsoever the way you are doing, right? And by matching your answers, you can answer your queries too. Right? So let's start the first question. The first question on the board. Everything is equal to everyone from top to bottom, from left to right. Screen visible नहीं है. नहीं है. Ma'am, voice is not clear. Voice भी नहीं clear है. Okay, wait. वीडियो तो क्लियर है, मैं वॉइस क्लियर नहीं है. Okay. Now clear? Yes, ma'am. Clear है मैम. Then angle of elevation. So please keep drawing the figures on the side as making the statement. मैम आपकी आवाज गूंज रही है. Ma'am, please ask Mansi and Piyush to mute themselves, please. We are just wait. Yes. Now okay. Just a few seconds. I think now it will be clear. Chaliye. Your first question is angle of elevation theta of the top of a lighthouse from a point on the ground is such that tangent theta is equal to 5/12. Right? When the person moves a distance 240 meters towards the lighthouse, the angle becomes phi. The person is moving 240 meters towards the lighthouse and the angle is becoming phi, such that you are given now tangent phi is equal to 3/4 and you have to find out the height of the lighthouse. I am waiting for your answers. I hope all have drawn the figure. Raise the hand if the question is done. I am coming to check your notebooks. Ma'am, please get side. थोड़ा सा side हो जाओ. Yes. Wait. I am just trying to focus on the question so that you can watch it clearly. हो गया मैम. Done. Lakshya has done. I am waiting for and to is this much time consuming. Shall I draw the figure?
Am I right, Lakshay? Is my figure correct? Yes, ma'am. ठीक है, theta phi are taken correct. Yes. Shall we ask the answer? Lakshay, what the answer is? 100 meter. कितना? 100. 100 तो नहीं है. Find the height of the lighthouse. Ma'am, 225. Who has given the answer? Ma'am, Mansi. Mansi. Yes, Mansi. Your answer is correct. Ma'am, mine is also 225. Whose answer is 225 now? Ma'am, Anshli. What the name you are speaking? Anshli. Anshwi. Okay, Anshwi has got the correct answer, 225. And Mansi also. Where are others? Shall I raise the statement of first question? Yes, ma'am. Only you are saying. I think all are busy in doing other questions so that they can give the answer of the next question very fast. Chaliye. Then C. They are saying there is a lighthouse. We are not given the height of the lighthouse. And from any point on the ground, the angle of elevation of the top of the lighthouse is theta. And if we move 240 meters towards the lighthouse, means this is 240 meters, the angle becomes phi. Was it the question? Okay. And we have to find out the height of the lighthouse, h. Let this is x. Now we have two triangles, ABC and ABD. Let me first go to the first triangle, ABC. In this triangle, we have perpendicular base. So we will have to apply tangent theta. We will get tangent at the place of theta in the smaller triangle. I have phi. So tangent phi is equal to h upon x. Five. What is the value of tangent phi given? I have erased. Let me know. 5 by 2. 5 by 12. Tangent phi 5 by is- 12, ma'am. No. Tangent phi is 3 upon 4. Tangent theta is 5. अच्छा, इसलिए गलती हो गया. Yes. This is एक 3 गलती हो. upon 4 is equal to h upon x. Right? So you will get x is equal to h multiply 4 by 3. I am taking out the value of x from here because I want the answer to be in h. तो मैं x को remove करना चाहूंगी, इसलिए मैं x की value find out कर रही हूँ so that in the next equation I can put the value of x. मेरा x अपने आप ही remove हो जाएगा. Right now I am taking the bigger triangle h upon x plus 240 is equal to tangent theta. And now tangent theta is 5 upon 12 is equal to h upon x plus 240. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, you will get 12h is equal to 5x plus, right? Now at the place of x we are going to put the value 12h is equal to 5 multiply 4 upon 3h plus 1200. Now get the value of h. It will be 20 upon 3. 3 से multiply कर दे तो 36h
is equal to 20h plus 3600. 16h is equal to 3600 और 16 से डिवाइड कर लीजिए 3600 को, ठीक है, you will get the answer. ठीक है, हो गया. Shall I proceed to the next question? Clear or not? Let me know. All of you unmute yourself. Yes, ma'am. सबको क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आर्यन, सहरावर, भाविका, चेतना, छाया, देवांशी, हर्ष, clear to all? So we are proceeding to the next question now. Yes, ma'am. Read the Yes, next ma'am. question. Clear. Read the next question. Try to draw the figure and do the question. Your next question is: a bird is sitting on the top of a 80-meter high tree. Its angle of elevation from a point on the ground is 45 degrees. The bird flies away horizontally and remains at the same height. After 2 seconds, its angle of elevation from the same point is 30 degrees. Earlier the angle was 45 degrees, and after 2 seconds, the angle is 30 degrees. We have to find out the speed of flying of bird. Figure draw कर लीजिए, then I am drawing, then you will check whether your figure is correct or not. Is your figure correct? Your Yes, point ma'am. may be different. You may have different points. In this question, we have to find out the speed of the bird. आप find कर रहे हैं पहले. Again, you have two right triangles, so you are going to apply trigonometric ratio in both the triangles. मैम इसमें जैसे हम इस मैम हाँ जी, मैम हाँ जी, बोलो. मैम जैसे इसमें हमें टाइम गिवन है कि वो 2 सेकंड तक उसने फ्लाई किया और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट डी पे पहुंच गई. तो इसमें हमें टाइम तो गिवन है, स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे. तो जैसे हम मान लो ए पॉइंट पे थी, तो ए से डी गई है, तो हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. क्या बी वो डिस्टेंस हो जाएगा उसका कि उसने ए पॉइंट से डी, Yes, from मतलब A. बी निकालना है. बी Yes, either you say from A to D or you find out the value of X, that is from B to E, right? You will get the distance. Ma'am, then we divide by 2. Yes, divide the distance by 2. You will get the speed. What the distance is coming. Here in this question also you are given that you have to use. Ma'am, distance of 58.56 आ रहा है. Yes, very good. Excellent. और मैम उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 29.28. बिल्कुल ठीक है. You have to use Yeah, under 3 is equal to 1.732. Now this is given in the question, so we are going to use it also. Value. मैम आंसर आ गया मैम 29.28 सेकंड. बिल्कुल ठीक है. Only one has got the answer. Waiting for others too. Hurry up. You have two triangles. In both the triangles, we are going to apply which trigonometric ratio? tangent. Tangent.
because perpendicular is given to us and we are somewhere concerned about the base. We want to find out a part of the हो base. गया मेरा अभी 29.28 हो Very गया. good. Two have done. चलिए, shall I do? Yes. Okay. Now we are considering triangle ABC. In this triangle, again perpendicular base. Perpendicular is 80, base is y. So 80 upon y is equal to tangent 45 degree, and tangent 45 is 1. 1 is equal to 80 upon y means y is equal to 80. आपके पास ये वैल्यू तो आ गई है a, right? But we have to find out the value of x. Now we are going to the next right triangle. Our next right triangle is DEC. DEC के अंदर जब आप trigonometric ratio लगाएंगे, you will get 80 upon x plus y, or we can say x plus 80 is equal to tangent 30, and tangent Ma'am, done. Okay. मैम बीच में आवाज कट रही थी. Yes, बेटा थोड़ी सी और डिस्टर्ब. वीडियो भी नहीं आ रही थी. Yes, there was little मैम disturb. मेरा भी हो गया. मैम डन. Okay, chaliye. Good if you have done. From here now, it will be 80 root 3 is equal to x plus 80, right? We have to find out the value of x. 80 को आप इधर shift कर दीजिए, you will get x is equal to 80 root 3 minus 80. 80 is common, right? Inside you have root 3 minus 1, but at the place of root 3, we have to put the value 1.732. Now you will multiply 80 with 0.732. आप minus करेंगे, you will get 0.732. 58.56. इसको multiply करेंगे, you will get 58.56. This is the distance. Time you are given 2 seconds. So when you have to find out the speed, divide distance with time. Means 58.56 divided by 2, you will get the speed to be 29.28 meter per second. Clear? Okay. Now coming to the next question. Your next question is. नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा. हाँ, अभी दिखाती हूँ बेटा. The question is this: a ladder rests against the wall. Wall के against एक ladder rest कर रही है at an angle alpha to the horizontal, right? Horizontal के साथ angle alpha बना रही है. Its foot is pulled away. उसके foot को पकड़ के आपने पीछे खींच दिया from the wall through a distance a. A distance से आपने उसे पीछे कर दिया है so that it slides a distance b down the wall. अगर आप उसे पकड़ के नीचे से खींचेंगे तो वो ऊपर वाला जो उसका पार्ट होगा वो भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, जो वॉल को ऊपर टच कर रहा होगा. तो ऊपर से वो b डिस्टेंस नीचे आ चुकी है. एंड नाउ द एंगल इज बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एंड यू हैव टू प्रूव इज दिस: a upon b is equal to cos alpha minus cos beta upon sin beta minus sin alpha. They are saying there is a मैम जहाँ पे अल्फा बना रही है वहाँ पे हमें कोई डिस्टेंस तो नहीं गिवन ना. no, एंगल अल्फा बना रही है. ये बना रही एंगल अल्फा. मैम वॉइस क्लियर नहीं है मैम. नहीं है. अब सही है मैम. Okay. There is a ladder placed against the wall and it is making angle alpha with the horizontal. और इसको आपने यहाँ से पकड़ के पीछे कर दिया. कितना डिस्टेंस पीछे कर दिया? You have shifted it the distance a.
और जो इसका पॉइंट यहाँ पर था वो जब ऐसे है तो वो ऐसे नीचे आ गया, यहाँ तक पहुंचने के लिए ऊपर वाले पॉइंट को भी नीचे आना पड़ा, राइट। एंड नाउ दिस डिस्टेंस इज बी, ए बी सी डी, दिस इज ई। Here EC is A, AD is B, and you have to prove that A upon B. Is it clear or do I have to write it again? A upon B is equal to cos alpha minus cos beta upon sin beta minus sin alpha. How will you do the question? थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दीजिए so that I can do. मैम वो बीटा लिखना भूल गया मैम आप उधर। Okay, this is बीटा भी तो लिखना। this angle is beta. How to do the question? मैम Yes. इसमें जो हमें स्टेटमेंट करनी है उसमें sin और cos है, तो हमें जैसे sin और cos, जैसे sin परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे कुछ लेना होगा। Yes, बिल्कुल ऐसे करना होगा, बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। Find out the value of cos alpha, cos beta, sin alpha. Put all the values in what we have to prove, and you will get the answer to be equal to A upon B after the cancellation of the terms. आपकी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल इटसेल्फ बी A upon B. मैम इन दोनों ट्रायंगल्स में एक बार cos अल्फा, एक बार cos बीटा और एक बार sin बीटा और एक बार sin अल्फा लगाना होगा क्या? Yes. जैसे Yes, you will have to do it like this. You do not have these values, so you will have to assume these values too by your own. We can take it as x and this one as y. What will be the value of cos alpha? x by AC, y by AC, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो y by AC, y upon AC. AC को भी हम कुछ assume कर लें. Let we हम assume z assume कर लो। z assume कर लीजिए, ठीक है। तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos, so y upon z, ठीक है। What will be the value of cos beta? Cos beta, now the triangle is this, y base upon ED, a plus a plus y upon ED, ED की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of ED? क्या है ये ED, क्या चीज है? What is this? मैम लेडर की जो वो हाइट जो नीचे हुआ था। This is ladder. ladder AC के भी height। ladder है, वही ladder को आपने खींच के इधर किया, that means whatsoever you तो have z you will have to ये take हो जाएगा, ये भी z। right. तो ये हो गई आपकी a plus y upon z. Now we have to find out sin beta and sin alpha. Sin beta is perpendicular upon hypotenuse. Sin beta perpendicular x upon hypotenuse. X upon z, right? ठीक है, और नहीं, हाँ ठीक है, perpendicular upon hypotenuse. And sin alpha is फिर से perpendicular b upon plus x upon में z, b plus x upon z. जरा फटाफट से and let me know whether it is coming out to be A upon B or not. Is the figure clear to everyone? I am not teaching only 4 or 5 students who are at the top who are speaking. I am not talking to them only. मैम सॉल्व, मैम a plus b की वैल्यू आ गई मैम। ऊपर एलसीएम लेके वो कट जाएगा, फिर y कट जाएगा और x कट जाएगा। Yes, बिल्कुल कट जाएगा. Shall I erase the figure? I am erasing the figure. फिर से एक बार देख लीजिए, आपके पास ये था कि आपके पास एक वॉल के अगेंस्ट एक लेडर है एंड द लेडर इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल. आपने इसको लेडर को पकड़ के नीचे खींच दिया, इसको फुट को आपने पीछे कर दिया, आपने इसको a डिस्टेंस से पीछे खींचा है, तो इसका जो टॉप था वो b डाउन आ गया, राइट. इट हैज कवर्ड द डिस्टेंस b, बट स्टिल द लेडर विल रिमेन द सेम. वो तो जितनी लेंथ है उतनी रहेगी. So if this was z, this ED will also be
Z, right? So now we are finding out the values of cos alpha, cos beta, sin alpha, sin beta by taking the ratios. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse and cos theta is equal to base upon hypotenuse. We have found out the values of these four ratios, and now we are putting these values over there. Cos alpha minus cos beta, cos alpha y upon z, and cos beta is minus a plus y upon z, upon sin beta minus sin alpha means x upon z minus b plus x upon z, right? ऊपर आपका सेम है डिनोमिनेटर, तो ये हो गया आपका y माइनस a माइनस y अपॉन z अपॉन denominator is z x minus b. Because of this minus I am changing this sign. मैंने यहाँ पर भी ये sign इसीलिए change किया है. Minus b minus x. Now x and x cancelled, y and y cancelled. हो And गया your प्रूव मैम. और ये दोनों का denominator same है, so they will also get cancelled. You will get minus a upon minus b. minus And minus. से minus cancel. Your answer is a upon a b. by b. Clear? How are the questions? मैम ये वाला कुछ ज्यादा ही अच्छा था. ज्यादा अच्छा. हाँ, चलिए थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस के साथ काम करते हैं. Now the question is the angle of elevation of a cloud. ये तो हो चुका आपका. 2 stations due south of a leaning tower which leans towards north at a distance a and b. ये बेटा आपको मुझे लिख के ही रखना पड़ेगा तो ये आपको क्लियर होगा. सो ये क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगी, राइट? आप तब तक करके दिखाइए. द टॉप्स ऑफ 2 towers of height x and y standing on a level ground subtend angle 30 and 60 degree respectively. फटाफट से 2 towers लीजिए. द टॉप ऑफ 2 towers of height x and y standing on level ground subtends angles of 30 and 60 respectively at the center of the line joining their feet. हो गया? Drawn the figure? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया. Okay. Find the ratio of x and y. 2 towers are there. One is of height x, other is of height y. मैम नीचे का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ. अंजय? नीचे का डिस्टेंस है या नहीं है? नहीं दिया हुआ. They are just saying that at the center. ठीक है, मिड पॉइंट इन्होंने बोल दिया, बहुत कुछ दे दिया. And the angles are given to be. Ma'am, 1:3. अंजय, I will have to see. Wait. 1:3. X वाली साइड का आपका एंगल 30 डिग्री रहेगा, Y वाली साइड का एंगल रहेगा आपका 60 डिग्री. ठीक है, ये आपका इसको भी Z ले लो, इसको भी Z ले लो. And you have to tell me the answer. And you are saying the answer to be कितना बोल रहे हैं? 1:3. बिल्कुल ठीक है. हो गया? Yes, मैम. 1:3. मैम वो कट जाएगा नीचे z डॉट z. बिल्कुल. बस हो गया मैम. X upon Z tangent 30 means 1 upon root 3, that is X upon Z, and Y upon Z is tangent 60, and tangent 60 is root 3. ठीक है, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, x और y का रेशियो आ जाएगा, या फिर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दोनों को डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, आई एम डिवाइडिंग द 2, x upon z upon y upon z. तो डिनोमिनेटर्स आपके कैंसिल हुए and you will be left with only x upon y. And on the right side we are getting 1 upon root 3 upon root 3 means 1 upon root 3 और ये नीचे एक और root 3. ठीक है, तो root 3 into root 3 will be 3. So x ratio y is 1:3. Clear? Next one. फटाफट से एक और क्वेश्चन कर दो, सिंपल सा. The pole a pole cast a shadow of 2 trees on the ground. मैम आवाज कट गई मैम, वापसी बोलना. A pole cast Yes, ma'am. a shadow
of length 20√3 meter on the ground. When the sun's elevation is 60 degree, find the height of the pole. Length of the shadow is 20√3. Sun's elevation is 60 degree. Find the height of the pole. 20. Ma'am, Sorry, 60. 60. 60. Ma'am, 60. 60. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. एक और कर ले, छोटा सा और. Yes, ma'am. चलो लिखो जल्दी से. A vertical tower of height 90 meter stands on the ground. Vertical tower of height 90 meters stands on the ground. The angle of elevation of the top of the tower as observed from a point on the ground is 60 degree. Find the distance of the point from the foot of the tower. Ma'am, 30√3. Let me check. Hmm. What हाँ. about others? 30√3. Yes, ma'am, ma'am. 32. Yes, ma'am. 30. Okay. चलिए ठीक है. Then proceed to the next one. I'm sure that you will be able to do one more in this time. At a point A, 20 meter above the level of water in the lake. क्लाउड वॉल है. 20 meter above the level of the water of the lake. At a point A, 20 meter above from the level of the lake, the angle of elevation of the cloud is 30 degree. The angle of depression of the reflection of the cloud is 60 degree. Find the distance of the cloud from point A. Ma'am, वापसी बोलना question. A point is there 20 meter above the level of the lake. From that point, the angle of elevation of the cloud is kitna? 30 degree. And angle of 30 depression degree. of the and angle of depression of reflection of the cloud. 60. This is 20 meter. Angle of elevation is 30 degree. Its reflection is here in the water, and the angle of depression is 60 degree. We have to find out the distance of the cloud from point A. मतलब इसमें A भी निकालना, hypotenuse. Yes, we will have to find out the distance of the बाकी cloud. क्वेश्चंस में तो BD निकालना पड़ता था. Yes, यहाँ पर आपको hypotenuse find out करना है. This is the question. The time is going to get over, so you are going to send me the solution, the answer. और जो मैम आपने एक और क्वेश्चन कहा था कि वो ऐसे नहीं हो पाएगा. 2 क्वेश्चन है ना. कौन सा था बेटा? एक बार मुझे फिर आप दोबारा से वो भेज देना, उसके पिक्चर भेज देना. Then I am going to end the session here. मैम वो जो मैंने मैम आपको एक वो बार रेशो इस वाला क्वेश्चन भेजा. की भी हाँ जी बोलो. मैम एक बार इस क्वेश्चन की भी पिक भेज देना. कौन सी? ये वाले question, जो अब आपने अभी बोला था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन. Do you want the statement? यस मैम. Sure. ओके, मैम थैंक वो यू जो मैम. मैंने मैम हाँ जी वो बोलो. जो मैंने वो जो एक क्वेश्चन नहीं भेजा था आपने जिसमें हमें कोई रेशो फाइंड आउट करना था बहुत पहले पिछले लेक्चर में. आपने क्वेश्चन नहीं भेजा था वो रेशो फाइंड आउट करना था. एक तो क्वेश्चन मैंने आपका व्हाट्सएप पे भेजा था आंसर उसका. लेक वाला ही था. सो कोई बात नहीं, मैं उसका आंसर भी भेज दूंगी. उसके बाद उसके मैं एक बार ही देख लूंगी बेटा.